Hello friends, I am Advocate Siddharth Malhotra, and thanks to Rajinder sir for giving me such an opportunity for getting live in front of all of you. And I guess his team is doing a very good job in the field of GST and taxation. So today we are going to discuss some constitutional provisions regarding applicability of taxes and GST. So firstly, we will be discussing Article 265, 269, 288, 300A and Article 14 of the Indian Constitution. So starting with Article 265, it says taxes are imposed by authority of law. Now what is authority of law? Authority of law has been prescribed by the legislature that as to which activity is taxable and which is non-taxable. If any tax is imposed without the authority of law, that is totally ultra vires and has no sanctity and shall be immediately refunded to the person depositing such an amount. For example, in a case if a person pays a GST amount or say a tax amount with respect to construction of a complex where he has booked a flat, whereby due to certain circumstances he may have to cancel that flat on which GST has already been charged by the developer or the builder. But the builder refuses, in almost all the cases the builder refuses to refund the amount of taxes deposited by the party or the person purchasing the flat. So in such a case, section 77 safeguards us. It says that, Article 265 safeguards us. It says that any tax which has been collected without the authority of law, here where there is no provision of service, ultimately when I have cancelled the flat, I have not availed any service. So what is the validity of the taxes collected by the builder? So here he is entitled to claim the refund of that amount which was deposited by to the builder at the time of booking and construction of that flat. So it can be claimed as a refund, and it shall always stand entitled and shall be refunded immediately to the concerned person depositing tax, and hereby no limitation period shall also apply, because limitation period governs only to those cases where the taxes have been collected by authority of law and where any such time period has lapsed, where there was a relevant period of 2 years to claim a refund of tax but has been claimed after expiry of 2 years. But in such a case where the amount does not pertain to tax, so it shall be refunded. Coming to the next point, Article 269, taxes collected by union but assigned to states. Some tax, all the taxes, that is the GST, is totally collected by central authorities. Where the assessee is registered in central authority, the taxes are collected by central authorities. Where the assessees are registered in the state authorities, the taxes get collected with the state authorities. But at the end of the financial period or at the end of the relevant period, say a month, the state and center nets of the amount to be distributed amongst them. Firstly, say a CGST was to be collected by central amounting to ₹100, but central has collected total GST amount of say 20 rupees CGST and 20 rupees SGST, whereby it has collected total sum of 40 rupees, and state has collected the balance amount, whereby it has collected a sum of say 60 rupees of CGST and 60 rupees of SGST. So here state has here the total sum arrives at 100 rupees to both state and center, but hereby state needs to give the balance 20 rupees amount to the center so that the funds can be equated. In such a case, if state authorities come and say that the central is not we are in shortage of funds and is not refunding any amount due to the assessee or to any party, hereby it's their internal adjustments and we have no concern with respect to this. Next we are coming to Article 288, exemption on taxes on water and supply of electricity. अब होता क्या है कि जो टैक्सेस होते हैं वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे लग ही नहीं सकते इस वजह से हमारे को जीएसटी के अंदर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे को एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई,
बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायरस। अगर वो उस पर टैक्स लगा देते एंड प्रायर दैट उसको एग्जेम्पशन देते, बिकॉज इट शैल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ एनी सप्लाई। अगर वो सप्लाई बनती तो उस पर टैक्स लगता, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि ये कभी इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, और अगर इस पर कभी टैक्स लगता भी है विदाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इट शैल बी टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनजस्ट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एज इट इज अ बेसिक इम्यूनिटी। सो अगर इस पे टैक्स हम पे कर देते हैं, फॉर बाय मिस्टेक लगा देता है कोई और हमने पे कर दिया, देन दैट शैल ऑल्सो बी स्टैंड एंटाइटल्ड टू बी रिफंडेड टू द पर्सन पेइंग दैट अमाउंट। इफ एनी, अगर किसी बिल्डर ने मेरे से कुछ चार्जेस में चार्ज कर लिया, वाटर चार्जेस के ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया या कुछ कर लिया, that is a basic amenity to me. He is getting it free of cost from the department, from the government. So how can he tax me? So अगर हम देखें तो अगर एक ऑफिस स्पेस के अंदर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल आता है, मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर भी ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। सारे चार्जेस पे टैक्स लगेगा, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे कभी नहीं लगेगा। सो सेक्शन आर्टिकल 288 हमारे को पावर देता है, हमारे को सेफगार्ड करता है कि हम कभी भी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं पे करेंगे। हाँ, तब पे करेंगे जब प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को अमेंड कर दे और हमारे पे टैक्स ना लगे, हमारे पे टैक्सेबिलिटी आ जाए इसकी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 300A, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय लॉ। सर, प्रॉपर्टी जो हमने ओन की है, प्रॉपर्टी इन जीएसटी इज डिफाइंड बाय द टर्म इनपुट टैक्स रेट। इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एसेट। मेरे लिए इनपुट टैक्स रेट एक एसेट है, क्योंकि मैं एक अमाउंट बियर करता हूं उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए, और जब मैंने उस आईटीसी को क्लेम कर लिया है, देन इट इज अ वेस्टेड पावर, इट इज अ वेस्टेड राइट कि मैं उसका बेनिफिट उठाऊं। बट ये भी कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस है हमारे एक्ट के थ्रू, क्योंकि इसे सेक्शन 17(5) से मेरे को कहीं ना कहीं क्रेडिट की ब्लॉकेज दे दी कि जी फलानी एक्साइज एक्टिविटीज पे मेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ मील, अगर एक मैं कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैंने वहां पे खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया, तो उस पर 5% टैक्स लग के आ रहा है, वो मेरे लिए ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्यों है? क्योंकि जी हमारी काउंसिल ने बोल दिया ब्लॉक्ड है, इसीलिए ब्लॉक्ड है। बट जो मेरा आर्टिकल है वो कहता है कि अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी में वेस्ट किया हुआ है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, देन इट शैल नॉट बी बार्ड। तो इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 17(5) itself is unconstitutional. After that, we can, if any of the remedies is not available to me, I always have a vested power under Article 14. It safeguards me. वो मेरे को प्रोटेक्ट करती है कि अगर मेरे साथ कहीं भी अनजस्ट हो रहा है, तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन और एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी कोर्ट वेयर आई एम अपीयरिंग, तो मैं वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपना केस प्रेजेंट करके उनको समझा सकता हूं कि मेरे को आर्टिकल से ही वॉयलेटिव है जो चीज, उस पर टैक्स नहीं लग सकता। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 265, 269, 268 एंड 300A, and ultimately a remedy has been provided by these articles and has been safeguarded by Article 14. So we should take a benefit of it and be aware about the changing law. Hope the video is helpful. Kindly like the video and share and subscribe.